जय श्री माता जी. கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து அமைதியாக ஒரு நிமிடம் உட்காருவோம். கண்கள் திறந்தே இருக்கட்டும். தெய்வீக அன்னையோட திருக்கமல பாதத்தை பார்த்து கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வர முயற்சிப்போம். தெய்வீக அன்னையோட இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு நம்ம கவனிப்போம். வலது கை இருதயத்தில் வைத்து மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதி தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு ஆனந்த நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள். வலது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். மெதுவாக கண்களை மூடி கவனம் சஹஸ்ராரம். மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। गणेशमन्त्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இரண்டு உள்ளங்கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களையும் நாடிகளையும் முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மையடைய செய்யுங்கள் தாயே. அதை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் தங்களுடைய பூமி தத்துவத்துக்குள் இழுத்துக் கொள்ளுங்கள். எங்களுக்கு சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். செயல்படுத்துங்கள் தாயே. கணேச தர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். தூய்மை அடைவோம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निक्षुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய வலது கை இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். இடது கை ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். இடது உள்ளங்கை வழியாக நம்ம சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். வலது கை இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுத்த இச்சா சக்தி சுவாமினி ஸ்ரீ நிர்மல வித்யா. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள். தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் ஆத்மா என்ற சத்தியத்தை உணர தூய விருப்பமும் தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். புத்தக ஞானம் கேள்வி ஞானம் இல்லாமல் உள்ளார்ந்து வர தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தெய்வீக அன்னையோட அன்பு சக்தியை உள்வாங்கிப்போம். காத்திருப்போம்.
வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது பக்கம் மேல் வயிற்றில் வைத்துக் கொள்வோம். லிவர் மீது வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா. தயவு செய்து எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மையாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனம் எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்து மீது இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹிமாலயாவோட குளுமையும் ஸ்ரீ சந்திர தேவதாவோட சீத்தலத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய சித்தத்தை சுத்திகரித்து சாந்தமாக வைத்திருங்கள். ஸ்ரீ ஹிமாலயா ஸ்ரீ சந்திர தேவதா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறி சில நொடிகள் காத்திருப்போம். தூய்மையடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री हिमालया साक्षात् श्री चंद्रदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை பவசாகரத்தில் வைப்போம். நடு பவசாகரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா. எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்களே எங்களை வழிநடத்த தகுதியை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். தயவு செய்து தாங்களுடைய அருளாசையை எப்பொழுதும் எங்கள் மீது புரிய வேண்டும் தாயே. அதற்கு எங்களுக்கு தகுதியை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் தாங்களுடைய அன்பு துணையால், அன்பு சக்தியால், அன்பு பாதுகாப்பால் நல்வழியிலேயே இருப்பார். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக பாதையில் எப்பொழுதும் எங்களை வழிநடத்துங்கள் தாயே.
சுய ஒழுக்கத்தை தந்தருங்கள். கீழ்ப்படிதல் குணத்தை தந்தருளுங்கள். சமநிலையை தந்தருளுங்கள். மாயையிலிருந்து வெளியேற்றி சத்தியத்தை உணர செய்யுங்கள். தாங்களுடைய ஒரு சிறந்த சிஷ்யனாக எங்களை ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதற்கு எங்களுடைய தியான நிலையை மேம்படுத்துங்கள். ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது கை ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். இடது ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய தூய அன்பால் நிரப்பி விடுங்கள். விருப்பு வெறுப்பில்லாத சமநிலையை தந்தருளுங்கள். மோகத்தை நீக்கிவிடுங்கள். தங்களுடைய அன்பை நாங்கள் எல்லோரிடமும் பகிர அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆத்மாவை விழிப்புணர்வு செய்து தாருங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். குழப்பமாக இருக்கிற மனமில்லை. நியாயப்படுத்துகிற புத்தி இல்லை. ஆதிக்கம் செலுத்துற அகங்காரம் இல்லை. துக்க சுக அனுபவிக்கிற சரீரமும் இல்லை. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா மட்டுமே. எந்த பற்றும் இல்லாது தூய ஆத்மாதான். பரமாத்மாவோடு ஒன்றினை அடைய விரும்புகிறோம் தாயே. எங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுங்கள். ஸ்ரீ சிவபார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिवपार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய வலது கை முன்னெத்தி பகுதிக்கு கொண்டு வருவோம். கழுத்து லேசா குனிஞ்சு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்யா சக்கர சுவாமினி. ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ர சக்தியால்
எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ர சக்தியோட அழிக்கும் சக்தியால் எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் அழித்து விடுங்கள் தாயே. எங்களை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மை அடைய செய்யுங்கள். மன்னிக்கும் சுபாவமும் தியாக மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். ஏகாதச ருத்ர சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய வலது கை சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கழுத்தை லேசா குனிஞ்சிப்போம். மனதார கூறுவோம். கடிகாரம் சுற்றும் திசையில் நம்மளுடைய தசையை சுத்தி மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி. எங்களுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வு நிலையை திருடப்படுத்துங்கள். யோக நிலையை தந்தருளுங்கள். சைத்தன்யத்தை உணர செய்யுங்கள். அமைதியும் ஆனந்தமும் தந்தருளுங்கள். தாங்களிடம் எல்லா ஆசீர்வாதத்தை பெற எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். முழு கவனம் சஹஸ்ராரம், அதிலிருந்து வர சைத்தன்யம். அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். I hope you all enjoyed your stay in Ganpatipur. Huh? The problem was that we could not arrange the cooking nearer your stay. Where you were, you had to walk a lot. But that walking was, I think, quite nice and must have helped you. It's good for diarrhea and other problems that you have. Actually, I had seen the place, but I hadn't seen all the hostels and residential places. But for your information now, somebody has donated me 1 acre of land free of cost, next to the sea on the other side. It's beautiful. And you should all send him a letter of thanks for that. So for next year, I'm sure we can organize something much better, in a much more collective way. Now the next tour is going to be, as you know, via Pune, Rahuri, Aklus. And these places are of more importance to us because Rahuri is a place where my forefathers ruled. So it's a very powerful place because they were great Devi Bhaktas. Also, all the Naths like Machindranath, Gorakhnath, all these great evolved souls called as Avdutas, who were incarnations of the great primordial masters, worked in that area. They are the ones who talked of Kundalini to begin with, openly. Then Pune, as you know, is called as Punya Pattanam, is a very holy place since ages. And then you will be going to a place called Nida, which is a river named after my name. And this river has got a lot of land around it which we have purchased, where we are going to do agricultural work. And also you will see there the Bhima river, where you will have your morning baths and you'll enjoy the river part of it. Also they have invited you for a function there. They have a very big function for 2 days.
So that's why I'm not coming, because I won't be able to do any programs during that time. But you enjoy yourselves there. Then you are going to another interesting place called Vani, which is a hill station and a very beautiful place. There's a dam as well. And then we'll be returning back. I'm taking this opportunity to talk to you because I seldom get time to talk to you. Now, as far as these outside things are concerned, they should all nourish you for your ascent. You have to see how much you have achieved within, what kind of temperament you have developed, how much detachment, how much collective, and how much generosity. All these things are to be seen. Judge yourself. Don't ask others to judge you. How much balance, how much wisdom, because all these things should settle you down in a way that gives you the necessary balance. I do not know how many years more we can do this, but I think it's very good because now I see the difference in the vibrations of people. Even before we had started in Ganpati Puri and today, there's such a tremendous difference. Actually, I'm getting cool breeze from your side now. So the ascent is the main attention and is the main concern for all of us. You have come here for your ascent. I know there must have been lots of difficulties and lots of inconveniences. Some people also burnt their skin. I'm sorry for that. But in this country, overdoing is regarded as something improper. And we should try to avoid overdoing anything. So by overdoing it, we actually go to the right or the left. And so please try to avoid everything that is overdoing. For example, you may like the baths in the Bhima River very much. But that's very nice at the point where it is shallow. But where it is deep, you should not go there. I'm only worried on that point because it's still one has to understand to keep yourself in complete control and not to go to places which are dangerous. Apart from that, it is dangerous to you. It is dangerous to the whole of Sahaja movement. And also to me, because I get very worried and upset if you get anything. So, the main thing is that you should keep yourself in the center. Do not go to extreme in anything. Everyone respects you if you are in the center. But if you go to extremes, they think there's something wrong, basically wrong with you. And also it upsets the whole of the program. So my advice is that keep to the center, do not overdo anything, keep everything in proper shape, uh, because it is strenuous for you people to travel like this, to face the sun. This is the coldest time in Maharashtra, so you can imagine that what else we could do? I mean, we have to achieve the results with the maximum of combinations. And I'm sorry for the people who got these burns. And actually, because I had to treat them and all that, I was so delayed that the whole program delayed. I mean, it was too much. But now, no more of this. Please don't go in the sun at all. There is no need. You have had enough of sun. And the sun melts your brain. And that makes persons mad in this country. If we go in the sun, we end up as mad people. So must be happening to brains also something. So it's better not to go in the sun at all. Keep it like that. Just for a while, it's all right. But don't sit in the sun. It's very inviting, I know, because you don't get the sun. But there is sun's rays inside this room, everywhere. So you shouldn't go and sit in the sun at all. That may really give you troubles because the sun in Oculus will be quite heavy. And I'm telling you also this because I may not be with you. So please look after yourself. That's the only thing you can do for me. For yourself,
You must do your meditation, you must worry about your ascent, and don't leave your things here and there. Be careful. I'm very happy the way they appreciated you in the temple of Mahalakshmi, and that they respected you and gave you something in your roti. And that is something really very sweet of them to accept you so readily into their own style and into their communities. And they said that we couldn't make out who is Indian, who is not Indian. Because I think in Ganpati Pure also your skin has become little uh, less pale, and maybe they said we couldn't make out who is who. So it's very good that now things are working out, that we are getting little homogeneous temperaments. Regarding pujas, as we had three pujas before, and the fourth one in Ganpati Pure, here also you will have three pujas. In these three pujas, I'm sure this being a quite a group, you will achieve much more, and things will be very much better. If you have any problems, you can let me know. We can arrange all that. But one thing, be sure that you do not overexert yourself. Neither you starve yourself or overeat. Anything doing too much will not be good for this trip. Because I think in the second group we are going to achieve much more than what we had achieved before. So the second group people should try to keep to a normal life, more attention to the spirit, more attention to their ascent. The last but not the least is the great news that so many others want to get engaged. I'll be very happy to get them engaged either in Pune or in Rahul. It will be a very good idea, those who want to get engaged. And if there are some people who still want to get married, let me know. Maybe we might be able to arrange something in Rauri. But the best is that those who want to get engaged, it's very easy to be done and it will be a good idea. So let me know before we leave Pune, anyone else that wants to. Now, if you have any questions or anything to be said, please say it now. Because I won't get such a chance to talk to you, this being such a small group here. Otherwise, always in a puja now in Pune, you will find at least 5 times more people than you are. Yes? What she saying? Hard time with your attention, what? What is it? Your attention goes to which places is the point. You try to see around more. You see, first of all, in meditation, you must discuss this. And there are many others who can tell you, they'll work it out. And secondly, the best way, you see, to put your eyes on the Mother Earth. Concentrate on the Mother Earth is the best way. When you are walking, keep your eyes on the Mother Earth. If somebody is talking to you, keep your eyes on the Mother Earth. You see, then you'll absorb everything better and you'll be stationed better. All right? That's a very good thing to think about, that our attention should not be frittered away. Gradually you'll settle down. I think most of you who have come for the first time will find it a little difficult in the beginning to adjust. But gradually you will. Because first of all, our attention goes to small, small things like have to sit on the ground, or you have to go by buses, or some sort of a filthy thing you see somewhere. So the attention always goes to the defects and the loopholes and to the filth, because attention has been like that. But then it starts going to the places
of beauty. In little things, you start seeing the beauty. In little things, you start seeing the divine. And then that's the time you should know that your attention will enjoy everything. But normally, you see, the attention, especially the kind of attentions we have, goes to the wrong things. What is the loophole? We start judging everyone. We start judging every place. Now, see this place. If you sit here, to me, it is marvelous. To you, it may be just made out of what this tin business, this, that, all that. You will start thinking. To me, it's beautiful. Because I see these beautiful saris spread here and the beautiful flower arrangements beautifully done, something so special, and the background and everything done with such care. How did they go there and how did they have these things tied up? It's remarkable. All these things come to my mind, and I start feeling very overjoyed that my boys have worked so hard to put all these things up, and how nicely, how they must have arranged it. All these ideas come into my head, and I feel very elevated. I don't see the tins or I don't see anything else. It is what you see, where your attention goes. So try to see something beautiful. There's so many beautiful things that one can see. Now, what I see is the heart of my children, the way they have done it, isn't it? If you are a deep person, you can see how they have spread the saris sweetly, how they have spread the flowers, how they have done it. So it is the attention. Where does it go? When you start seeing for yourself what is my comfort, I should have this, I should have that, then there is no joy. But the joy lies in seeing the deeper side of what they have done for us, how they have worked for us, how they have brought things for us, how they have cooked for us with love. You are doing no work compared to what these people are doing, no doubt. You are moving like royal people, really, to be. And they had to do it, especially Ganpatipura was a very difficult place. People had to come all the way from Nagpur. 50 people came to cook your food. Money is not everything. Even if you pay money, you can't do that. It's love, it's the feeding, it's the attention, it's the generosity of looking after the guests. And that is how one should enjoy how much they have done for us, how we are enjoying. That's how your heart will become deeper and deeper. But if you have a convex heart which always looks at something that's wrong, something bad, something this, or at things, what should I buy, what should I purchase, all that can go off your head. But if you want to purchase something nice with a good heart, then you will just find it whatever you want. And you can do it very fast. When I did yesterday shopping for all the centers and all that was, I think, 1 lakh of rupees perhaps for all the Indian centers, and I did it in no time. Because it was for them, I was much better off. If it was for myself, I don't think I would have done so well. For you'd be surprised, I never buy anything for myself. Don't have time. You people give me so much, I don't have to buy either. So it is how you look at things, how you do things, how you work it out. And yesterday, the shop I went to was all full of fragrance. Everything there was fragrance, and everybody was feeling it. It's just because I was enjoying the whole thing, enjoying doing for others. It's not others. Who is the other? Sahajogis are not the others for me. I am doing for myself. But my greater being, my higher being, that's how you should look at things. Alright? Then you will enjoy. आता सांगलीकरांना सांगायचं असं की इथे आपण पूर्वी एक पूजा केली होती आणि आता परत केलेली आहे. आणि सांगलीला बरंच पेपरात आल्यामुळे वगैरे बरंच काम झालेलं आहे. आणि इथे सहयोग बसूही शकतो कारण वातावरण फार छान आहे, शांत आहे आणि तिथले एकंदर लोक सगळे मदत करायला तयार आहेत. तर सांगलीकरांना आमच्यातर्फे आम्ही एक लहानशी भेट देणार आहोत. तर ती भेट त्यांनी स्वीकारावी अशी माझी विनंती आहे. आणखीन एक वस्तू आहे पण ती अजून बाजारातच राहिलेली आहे. ती आल्यावर ती समजेल. कोण घेतील?
I bought lots of things, but they are yet not delivered. So one thing I have to give. Give me. Yeah, Tab. This is our Sahjogi, Mr. Tavde, who is a very big officer here. He's done this. And this gentleman is Mr. Mari, who is the district, district. Uh, he's a district agriculture officer here, who looks after the agriculture of the whole district. And he got his realization 75, and now he's posted here. So he came for the puja. All his family is here. So Mr. Tavde, who has done all the good work for you, give him a hand. Also, yes, there's Yadav Sagan. Mr. Yadav, who has published everything in the paper, and who is the newspaper gentleman here, Mr. Yadav. Give him. ठीक आहे, photographs तुमच्या चांगले यांच्या जाऊ दे यादवांच्या. They are so highly placed but so humble. Just look at that. He's the man who is in charge of the whole thing here. He's the engineer, and he's the gentleman who is in charge of all the district's agricultural activities. He's the officer in charge. And another one is the editor of the newspaper. See, when people get egoistical, they just don't relate themselves to the surroundings. They don't understand how far they are. It's like a ball, which you just give it a push and it goes up in the air, without knowing that it's just a ball full of air. That's why we call it bumptious. You see? So those who really are solid people, who have some solid training and solid upbringing, they don't get into ego trips. They don't get into these trips. They first of all become very humble and try to learn and become humbler, and again learn and become humbler. Like Newton has said that I am like a little child collecting pebbles on the shores of knowledge. A person like Newton, he said so. But nowadays I find it's difficult to find people of that kind. But those who are very learned, in the West also I've seen them being very humble people. In their writings, in their whole behavior, you can see they're very humble people. Humility is a sign of knowledge. When the tree is loaded, it bends down. When it is loaded with fruits, it bends down. In the same way, a person who has knowledge will bend, will be very humble. आता आजच्या पूजनाला खरोखर महत्व असं आहे की आज महालक्ष्मीचं पूजन आहे. आणखीन महालक्ष्मीचं जे महात्म्य आपल्या सहयोगात आहे ते कोणत्याच शक्तीचं नाही. कारण महालक्ष्मी ही शक्ती, जिला आपण सुषुम्ना नाडी म्हणतो, त्यात वास करते आणि त्याने पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टमचं चालन होतं. या महालक्ष्मी शक्तीला सशक्त करण्यासाठी आपल्या उत्क्रांतीमध्ये ज्या ज्या घटना झाल्या त्यात मुख्य म्हणजे महालक्ष्मीचं अवतरण आहे. महालक्ष्मीनी अनेकदा अवतरणं घेतली आणि तिचीच एवढी हिंमत आहे की तिने एक शरीर धारणा करून या संसारात जन्म घेतला आणि कार्य केलेलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की आपल्याला सर्व ह्या महालक्ष्मीच्या अवतरणाबद्दल कुणी माहिती दिलेली नाही किंवा इतके गहन कोणाला त्याच्याबद्दल सविस्तर वर्णनच माहीत नाही. आता महालक्ष्मीचं तत्व म्हणजे लक्ष्मीच्या तत्वावरच आहे. म्हणजे लक्ष्मीची आई ही महालक्ष्मी म्हटली पाहिजे. लक्ष्मीची आई म्हणजे लक्ष्मी जी आहे, जेव्हा माणसाजवळ लक्ष्मी येते, लक्ष्मी सुद्धा एक
संतुलन असलेली एक स्त्री स्वरूप देवी आहे. इतकी संतुलनात आहे ती की एका कमळावर उभी राहते. तिच्या हातात 2 कमळ आहेत. एक गुलाबी कमळ, आणखी त्या कमळामध्ये सुद्धा एक नाजूकपण आहे. त्या गुलाबी कमळाचा अर्थ असा आहे की जो मनुष्य लक्ष्मीपती असेल, ज्याच्याजवळ लक्ष्मी असेल, त्याच्यामध्ये स्वभावात एक गुलाबीपणा असला पाहिजे, म्हणजे गोडवा असला पाहिजे, तो रखरखीत नसला पाहिजे. दुसरं असं की एका कमळाकडे आपण पाहिलं तर त्या कमळामध्ये एखादा भुंगा जरी आला तरी त्याला स्थान मिळतं, आणि त्याच्यात जेवढे काटे असतात त्या भुंग्याला, पण त्यालाही कमळामध्ये स्थान मिळतं, म्हणजे त्याचंही आतिथ्य होतं. तेव्हा ज्या मनुष्याजवळ लक्ष्मी असेल त्याच्याकडे सगळ्यांचा आतिथ्य असायला पाहिजे. मग तो कसाही असेल, प्रत्येकाची विचारपूस करायला पाहिजे. मग तो लहान असो मोठा असो, प्रत्येकाच्या दर्जाप्रमाणे त्याची विचारपूस करायला पाहिजे. तिसरं म्हणजे एका हातामध्ये त्यांच्या एक हात असा आहे आणि एक हात असा आहे. याचा अर्थ असा आहे की दान असायला पाहिजे. ज्या माणसाच्या हाताला दान नाही तो लक्ष्मीपती. आणि दानच जी आहे, दानामध्ये जो आनंद आहे तो कोणत्याही गोष्टीला मिळवण्यात नाही. दान करण्याची शक्ती ज्याने मिळवली तो सगळ्यात महान मनुष्य असं मला वाटतं. कारण त्यांनी मनुष्याच्या ज्या चरमसीमा आहेत त्या गाठलेल्या आहेत. दान देता आलं पाहिजे, आणि हे डाव्या हाताने जे दान लक्ष्मी करते, तसंच जो लक्ष्मीपुत्र असेल त्यांनी सुद्धा आपल्या हाताने, डाव्या हाताने असं दान केलं पाहिजे. म्हणजे डाव्या हाताला उजव्या हाताला कळलं नाही पाहिजे. डाव्या हाताने म्हणजे सहज, त्याला काही मेहनत करायला नको, आणि सारी इच्छा दानाचीच असायला पाहिजे. आणि खरोखर जगामध्ये जेवढ्या वस्तू आहेत त्यांना एकच, मला तरी वाटतं एकच महत्व आहे की त्या वस्तू आपण दुसऱ्यांना देऊ शकतो, त्यातनं आपलं हृदय ओतू शकतो, त्यात आपलं आपण दाखवू शकतो. म्हणून प्रत्येक वस्तूला महत्व आहे, नाही तर बाकी वस्तूला काय महत्व. स्वयंभू जेवढ्या मूर्त्या आहेत त्यातली महालक्ष्मीची मूर्ती आपण फार मानतो आपण सहयोगात. कारण हिच्यामुळे आमची कुंडलिनी जी आहे तिला उठायला एक मार्ग किंवा नाडी ही प्रस्तुत करते. ही नाडी, महालक्ष्मीची नाडी जी आहे ती लक्ष्मी तत्वाच्या वर, जेव्हा हा हात आहे हा आश्रय, ह्याला 2 अर्थ आहे. आश्रय, सगळ्यांना आश्रय देणे, सगळ्यांचं रक्षण करणं, त्यांनी हा हात. पण उलट पाहिलं तर जे लक्ष्मीपती असतात त्यांच्यावर सगळ्यांना धाकच असते, भीतीच असते. ती नुसती साधी कमळावर उभी असते, काही आपलं काही विशेष दाखवत नाही. नाही तर लोकांना मोटारी लागतात, हे दाखतात ते दाखवण्यासाठी की आम्ही म्हणजे फार काहीतरी सुसंपन्न आहोत, दुसऱ्यांच्या मनाने फार उच्च आहोत. तर ती इतकी म्हणजे आपलं तिचं वजन लोकांवरती घालत नाही, कोणत्याच तऱ्हेचं प्रेशरायझ ज्याला म्हणतात ते करत नाही. ती हलक्याने उभी राहते, अलगद, तिचा कोणाला त्रास नाही झाला पाहिजे. लक्ष्मीपती खरा जो असतो तो कुठेतरी कोपऱ्यात येऊन बसेल, अगदी श्रद्धेने शांतपणाने बसेल आणि हळूच निघून जाईल. त्याला जर दान जरी द्यायचं असलं तरी म्हणेल, माताजी हे माझं दान आहे पण माझं नाव सांगायचं नाही, ते असंच ठेवा तुम्ही कसं तरी करून, ते मी दिलं, तुमच्या चरणी दिलं, झालं, आता मला काही पुढे नको. अरे बाबा पण मला त्याला सांगायला लागणार, हे ट्रस्टकडे पैसे जाणार, मी पैसे घेते, ते तुम्ही कुणाचे नाव सांगा, त्याला मला हरकत नाही, पण हे मी दिलं तुम्हाला, माझं नाव नको. फक्त तुम्हाला जर इन्कम टॅक्सचा काही प्रॉब्लेम असला तर त्याच्यासाठी मी उभा आहे, पण बाकी त्याचं माझं नाव नको, काही नको, अगदी नम्रपणाने असं करतात. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து இன்றைய தியானத்துக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள். நமஸ்காரம் பண்ணி குன்றணி வைத்து மந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.